Hello everyone, welcome to सरल English at Sakhar Institute. रोहन काफी लंबा है जबकि उसके बाकी भाई बहन उतने लंबे नहीं हैं। वो काफी समझदार है जबकि उसके बाकी भाई बहन या उसके फ्रेंड्स उतने समझदार नहीं लगते. So, how do you say all these sentences? He is quite tall, but yes, you can use but. He is quite tall, but his other brothers and sisters are not as tall as him. He is quite wise, but his friends are not wise enough. Clear? यहाँ पर हम sentences में but भी use कर सकते हैं. But means लेकिन मोस्टली जब हम कोई सेंटेंसेस में कंपैरिजन दिखाते हैं बिटवीन टू लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, तो वहां पर हम हमेशा वेयर एज यूज करें तो वो ज्यादा बेहतर लगता है. लाइक he is quite tall whereas his siblings or his brothers or sisters are not so tall. He is quite intelligent whereas his other friends are just average. Clear? My boss is quite hardworking, whereas the other staff members are just average. Clear? तो जहाँ पर भी हमको कंपैरिजन करना है कि दो चीज़ों के बारे में कि एक बहुत अच्छी है और एक उतनी अच्छी नहीं है, या एक बहुत बुरी है पर दूसरी उतनी बुरी नहीं है. Like you can say, Delhi is so polluted whereas Noida isn't much polluted. हालांकि आप बोल रहे हैं कि दिल्ली और नोएडा बिल्कुल पास हैं. क्लियर? एनसीआर है. सो आप तब भी कह रहे हैं कि भाई दिल्ली बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है, लेकिन एनसीआर में जो बाकी रीजन्स हैं जैसे गुड़गांव हो गया, आपका नोएडा हो गया, दे आर्ट एज पोल्यूटेड एज दिल्ली. क्लियर? The chapatis are quite warm whereas the sabzi is totally cold. क्लियर? चपातीस तो गर्म है लेकिन सब्जियां ठंडी हैं बिल्कुल. Whereas basically means हिंदी में जबकि. You can say she talks a lot whereas her sister is very quiet. वो बहुत बात करती है जबकि उसकी बहन बहुत शांत स्वभाव की है. क्लियर? He is quite short-tempered whereas his mother is very patient. Clear? वो बहुत short tempered है जबकि उसकी मम्मी बहुत patient है, बहुत धैर्यवान है. Clear? So whenever we make a comparison between any two non-living or living objects, there it is better to use whereas. पर comparison हमारा ऐसा होता है कि उसमें हमें काफी you can say कोई बहुत major difference नजर आ रहा है. Clear? Like you can say, this city is very green, whereas if you go towards, you can say, if you go towards west, it's not that green. Clear? तो ये city बहुत green है, लेकिन अगर आप west की तरफ थोड़ा जाएंगे तो वहाँ पर वो इतना green नहीं है. Clear? Now, if I say, हालांकि वो बहुत पुअर बैकग्राउंड से है लेकिन पढ़ाई में बहुत अच्छी है. अब हिंदी क्या है ना, हमारी अपनी भाषा है. हमारा जहाँ मन करता है हम लेकिन लगा देते हैं, हमारा जहाँ मन करता है हम जबकि लगा देते हैं, हमारा जहाँ मन करता है हम हालांकि लगा देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सामने वाला भी हमारी बात समझ जाएगा. बट व्हेन इट कम्स टू अ फॉरेन लैंग्वेज, व्हेन इट कम्स टू अ लैंग्वेज विच इज अदर देन योर नेटिव लैंग्वेज और योर मदर टंग, देन वी हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल बिकॉज we even have to be sure that the other person is also able to understand us. Clear? So the sentence here I said was, वो काफी हालांकि वो काफी पुअर बैकग्राउंड से है लेकिन पढ़ाई में बहुत अच्छी है. Clear? अब इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? Although she is from a very poor background, she is quite good in studies. Clear? So, हालांकि के लिए हम इंग्लिश में यूज करते हैं although. But you have to remember that whenever we are using although in a sentence, we will not use but.
when we are talking in English. जैसे कि आपने हिंदी में देखा, हालांकि वो बहुत पुअर फैमिली से है लेकिन पढ़ाई में बहुत अच्छी है, वहाँ पे लेकिन यूज कर रहे हैं. बट इन इंग्लिश वी विल नॉट यूज लेकिन और वी विल नॉट यूज बट when we are talking of although. Clear? Although he is quite rich, he is very miserly. Fine? हालांकि वो बहुत अमीर है लेकिन बहुत कंजूस है. Clear? Although she's my sister, I don't get along very well with her. हालांकि वो मेरी बहन है, हमारी आपस में बहुत अच्छी नहीं बनती है. Clear? Although she lives quite close to my house, we hardly meet each other. हालांकि वो मेरे घर के बहुत पास रहती है पर हम बहुत ही मुश्किल से कभी कभी ही एक दूसरे से मिल पाते हैं. Although she is senior to me, I call her by name. हालांकि वो मुझसे सीनियर है लेकिन मैं उसको नाम से ही बुलाती हूँ. Clear? Although he is 10 years younger to me, he looks my age. हालांकि वो मुझसे 10 साल छोटा है लेकिन मेरे बराबर ही लगता है. Clear? Although I have a car, I prefer going to office by metro. हालांकि मेरे पास गाड़ी है, मैं ऑफिस मेट्रो से ही जाना प्रेफर करती हूँ. Clear? So in English you have to remember that whenever you are using sentences using although, clear? कि हालांकि ऐसा है पर ऐसा नहीं है. तो English में when we are using although, you will not use but in the sentence. Clear? And you even have to remember that the sentence may not always start with although. Although can even come in between the sentence. Like I say, she is quite intelligent although she belongs to a poor family. Clear? He's quite lazy although his father pushes him too much to work. वो बहुत आलसी है हालांकि उसके पापा उसको बहुत पुश करते हैं काम करने के लिए. Clear? I prefer going by metro although I have a car. मैं मेट्रो से जाना पसंद करती हूँ हालांकि मेरे पास कार है. तो it's not necessary that you have to use although in the beginning of the sentence. Although can also be used as a conjunction in the middle of the sentence. Clear? So in this video we learned about two words, very important. Whereas, which is used for comparison. Fine. Comparison, which is like kind of a contrast. Clear? And although, here also it's like you can say we are talking of different situations कि हालांकि कोई ऐसी चीज है लेकिन उसके ठीक opposite उसका कुछ result आ रहा है. Clear? Although she was quite unwell during her exams, she topped the class. Clear? तो यहाँ पर भी एक कॉन्ट्रास्ट है कि हालांकि उसकी तबीयत बहुत खराब थी, उसने फिर भी टॉप किया क्लास में. तो समथिंग ऐसी आप एक सिचुएशन में है जिसमें हम वो रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, वी आर गेटिंग अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट और समथिंग लाइक ऑपोजिट रिजल्ट वी आर गेटिंग. सो इन दोज काइंड ऑफ सेंटेंसेस ऑल्सो वी यूज although. I hope the video is useful for you. Stay tuned, stay connected, keep following my videos, keep sharing my videos, and keep showering love to me as well as my videos. And don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye.